A regular customer of your company has approached you for extension of credit facility for purchasing of the goods. On an analysis of past performance and on the basis of the information supplied, the following pattern of the payment schedule emerges. Pattern of the payment schedule: at the end of the 30 days, 60 days, 90 days and 100 days, 20% of the bill, 30% of the bill, 30% of the bill and 18% of the bill. And there will be a non-recovery of 2%. The customer wants to enter into a firm commitment for purchase of goods worth rupees 30 lakhs in the year 2019. Deliveries to be made in equal quantities on the first day of the each quarter in the calendar year. The price per unit of the commodity is rupees 300, on which a profit of rupees 10 per unit is expected to be made. It is anticipated that taking up of this contract would mean an extra recurring expenditure of 10,000 rupees per annum. If the opportunity cost is 18% per annum, would you, as the finance manager of the company, recommend the grant of credit to the customer? That is a question. Assume that say the 1 year is equal to 360 days. This question is taken from a revisionary test paper of intermediate November 2019 and it is the 9th question. Please go through the question. Chalo, I want somebody of you to tell me that what is the existing sales of the company. So friends, we understand that over here the existing sales information is not given. The question is providing the information that a regular customer of your company has approached you for extension of credit facility for purchasing goods. So they have approached to you, say, for the purpose of purchasing goods from you, and so on. Information is given. They want to buy goods from you for an amount of rupees 30 lakhs. So we understand that say the 30 lakh rupees is the amount of the sales value. We have not been given, हमको क्वेश्चन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्जिस्टिंग सेल्स का इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है. हमको इतना ही दे रखा है दैट से यू आर रिक्वायर्ड टू डिसाइड वेदर टू सेल गुड्स टू दिस कस्टमर और नॉट. अगर हमने ये कस्टमर को गुड्स बेचा तो हमारा सेल्स वैल्यू 30 लाख से बढ़ेगा, ऐसा हमको क्वेश्चन में दे रखा है. Now for the purpose of decision making, we understand that say method number 1 cannot be used. Why? Because the existing sales information is not given. Method number 3 cannot be used. Why? क्योंकि जो भी existing sales है वो 30 लाख से तो बढ़ेगा. So method number 1 नहीं हो सकता है, method number 3 नहीं हो सकता है. तो बचा कौन सा? सिर्फ second method. So we have to do this answer with the second method. क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है that the selling price is 300. So 30 lakhs upon 300 will give the number of units that we are going to produce and sell. फिर हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि सेलिंग प्राइस है 300 का और उसमें प्रॉफिट है 10 रुपए का, तो बाकी का क्या हो जाएगा? कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगा. नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू कॉस्ट पर यूनिट, तो अपने पास टोटल कॉस्ट हो जाएगा. फर्दर हमको 10,000 रुपए का एक्स्ट्रा रिकरिंग एक्सपेंडिचर दे रखा है. ऐसा करके हम लोग टोटल कॉस्ट का कैलकुलेशन करेंगे. फर्दर इंपॉर्टेंटली वी हैव बीन प्रोवाइडेड विद द इंफॉर्मेशन दैट ये कस्टमर जो है ना एक साथ पूरा का पूरा पेमेंट नहीं करता है, वो स्कैटर पेमेंट करता है. ऐसा हमको क्वेश्चन में दे रखा है. चलो राइट एंड आंसर द क्वेश्चन. हेडिंग राइट डाउन. Incremental approach for decision making.
In that, write down step number 1, calculation of total cost. In that, write down working note number 1, calculation of number of units. उसमें लिखो सेल्स अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट. What is the value of the sales? 30 lakhs. What is selling price per unit? 300. So 30 lakhs upon 300 will give the number of units. That is 10,000 number of units. तो हम लोग 10,000 नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करके सेल करेंगे. वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट. फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है जिससे हम लोग टोटल कॉस्ट का बाइफर्केशन कर सकते हैं कि कितना वेरिएबल कंपोनेंट है और कितना फिक्स कंपोनेंट है. उसका बाइफर्केशन करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं है और उसका ज़रूरत भी नहीं है. क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ ये कस्टमर के बारे में सोचना है that whether to sell goods to the customer or not. So the sufficient information is not given with which we can do the bifurcation, और उसका ज़रूरत भी नहीं है because we have to take decision only with respect to this customer whether to sell goods or not. दूसरा important point, listen carefully. क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है that say the deliveries are to be made on the first day of the each quarter. ऐसा दे रखा है. Deliveries to be made in equal quantity on the first day of each quarter in the calendar year. इसका मतलब ये है कि sales of the company is say the evenly spread throughout the year. Again, ये information देने का कोई मतलब नहीं है because always we make an assumption that sales of the company is evenly spread throughout the year. So calculation of total cost में लिखो cost per unit multiplied with number of units plus extra recurring cost. What is the cost per unit? 300. In that the profit is 10. So cost per unit is 290. Into number of units are 10,000. That comes to an amount of 29 lakhs. Plus extra recurring expenses. That is an amount of rupees 10,000. So the total cost is 29 lakh 10,000 friends. That is the step number 1, total cost. Chalo, with paragraph write down. It has been given that deliveries are to be made on first day of each quarter
full stop. However, this information is not useful because this assumption is made otherwise also. Full stop. Assumption is made that sales of the company is evenly spread throughout the year. Sales of the company is evenly spread throughout the year. Full stop. Step number 2. Calculation of carrying cost. Try to calculate the carrying cost on your own. Now friends, what we can see that ये जो कस्टमर है ना, वो अपने को एक साथ पूरा का पूरा पेमेंट नहीं करता है. ये कस्टमर है अपने को पार्ट्स में पेमेंट करता है. एट द एंड ऑफ द 30 days वो कुछ पेमेंट करेगा. एट द एंड ऑफ द 60 days वापस वो कुछ करेगा. ऐसा करके वो पार्ट्स में पेमेंट करता है. तो हमारा पैसा जितने दिन के लिए ब्लॉक होता है ना, उतने दिन का हमको कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने का. जैसे हमारा 20% ऑफ द फंड्स 30 days के लिए ब्लॉक है, हमारा 30% फंड्स 60 days के लिए ब्लॉक है, हमारा अगेन 30% ऑफ द फंड्स 90 days के लिए ब्लॉक है. तो जितना परसेंटेज ऑफ द फंड्स जितने दिन के लिए ब्लॉक है, उसका हमको कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने का. सो प्लीज राइट एन आंसर अलोंग विथ मी. कैलकुलेशन ऑफ द कैरिंग कॉस्ट, उसमें लिखो 29,10,000 into 20% of the funds is blocked for 30 days into 20% into 30 divided by 360 multiplying with cost of capital. What is the cost of capital given to us? It is 18%. Plus again 29,10,000 into 30, 30, 60, 90. So over here 30% for 60 days. Again 30% for 90 days. Multiplying with the cost of capital 18%. This is 29,10,000. Next 100 days and this is 18%. So 29,10,000 into 18% into 100 days.
That is the way we are required to make the computation of the carrying cost for the funds which is blocked in the business. तो जितने दिन के लिए पैसा हमारा ब्लॉक रहता है उतने दिन के लिए हमको उसका कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड देन वी आर रिक्वायर्ड टू मेक द टोटल ऑफ द सेम. So 29,10,000 into 20% into 30 divided by 316 into 18%. So 8730 plus 29,10,000 into 30% into 60 divided by 316 into 18%. 26190 plus 29,10,000 into 30% into 90 divided by 360 into 18%. So 39,285 plus 29,10,000 into 18% into 100 divided by 360 into 18%. 26190. Now we'll make the calculation of the total. 8730 plus 26190 plus 39285 plus 26190. So 1,03,365. ऐसा करके कैरिंग कॉस्ट का कैलकुलेशन होगा. I'm sorry, 8730 plus 26190 plus 39285 plus 26190. So it is 1,03,395. So it is 1,03,395. That is the carrying cost. Now method number 2 of doing answer. Now ये जो आंसर है वो हम लोग एक ऑल्टरनेटिव मेथड से भी कर सकते हैं. कैसे वो मैं आपको समझा देता हूँ. Everybody is requested to pay attention. We can make a simple calculation like this. We can have the working out the answer in this way. Working out number 1, calculation of average collection period. हम लोग क्या कर सकते हैं, एवरेज कलेक्शन पीरियड का कैलकुलेशन कर सकते हैं. परसेंटेज डेज, परसेंटेज इनटू डेज, ऐसा कर सकते हैं. इन अ वे दैट से हम लोग ऐसा समझते हैं दैट 20, 30, 30, 18, 20, 30, 30, 18, and this is 2%. 3,6,900, 30, 60, 90, 100. यानी हमारा 20% फंड्स 30 डेज के लिए ब्लॉक है, 30% फंड्स 60 डेज के लिए ब्लॉक है. तो जितना पैसा जितने दिन के लिए ब्लॉक है उसका हम लोग एवरेज कलेक्शन पीरियड फाइंड कर सकते हैं. So 0.2 into 30, that comes to 6. 0.3 into 60, that comes to 18. 0.3 into 90, that comes to 27. 0.18 into 100, that comes to 18 days. So we understand that the weighted average collection period is 69 days. So you can make the computation of overall collection period. So जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड पेमेंट्स आता है उसका हम लोग एक वेटेड एवरेज टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं. एंड देन वी अंडरस्टैंड लाइक दिस, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 360 days multiplying with weighted average collection period into cost of capital. So the total cost is 29,10,000 divided by 360 days
into 69 into weighted average collection period is 18%. So 29 lakh 10,000 into 69 divided by 360 into 18%. That comes to rupees 1 lakh 395. So get on the answer. Step number 3. Calculation of profit or loss. चलो स्टेप नंबर 3 आप अपने आप ट्राई करो. कैलकुलेशन ऑफ द प्रॉफिट और लॉस ऑन सेलिंग गुड्स टू दिस कस्टमर. So we understand it's a calculation of the profit or loss. Write an answer along with me. Sales of the company is 30 lakhs. Total cost, it is 29 lakh 10,000. Carrying cost, it is an amount of 1 lakh 395. Loss on account of bad debts is 2% of the sales. So from the revenue of 30 lakhs, all the expenses are deducted. So there is a loss of 70395. That is the way the profit or loss is calculated. So we can observe that there is a loss, so we should not sell goods to the customer. Right an answer? The final decision. Do not sell goods to customer. Right an answer.